Those who are preparing for CAPF AC 2025 interview, now date is published, schedule is published. Now you should give full focus to your interview preparation. Don't think where you are. Don't think what mistakes you have done. Now it is time to give you yourself 100%. Now it is time you should dedicate yourself to this preparation journey. And remember, every candidate is having potential. Every candidate can get higher marks. सो आपको हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और मिस्टेक से सीखना है, अपने मिस्टेक से भी और दूसरे के मिस्टेक से भी. वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि वी आर हैविंग so much information, so much experiences available in the form of transcript, video, communication. So many channels के थ्रू आपके पास बहुत सारी बातें अवेलेबल हैं. दिस इज ट्रू. बहुत सारे जो आज के डेट में फैसिलिटीज हैं उसके कारण कंपटीशन भी है. देयर वाज अ टाइम कि गेटिंग 100 marks was an achievement. Now so many people are getting 120 even. So you have to learn, believe in yourself, and remember, every candidate can get even lower marks and higher marks. Some of the marks already I have shown you. Still, you should see time and again something I am explaining, I'm showing you so that you can have confidence, you can get pushed up. Abhishek Kumar Yadav, so he got selection in 2024. So before that, it was his third interview and continuously, okay, 22, 23 and 24, okay. So in 22, in interview, he got 92 marks. In 23, just 75, means it was a decline of 17 marks. So minus 17 marks. Here, see, 335, but cutoff was higher in 21 and 22 both years. And here he just got 290 total. Okay, so in fact, 17 marks decline in interview personality test. Now see here, in 24, when he got selection, interview marks is 120. So if you see here, from 23 to 24, it is increase of 45 marks. It is not that he changed himself drastically. No. Small things where he was lacking, he improved himself, worked hard, attended mock interview and all. Wherever suggestion was given, he followed. And plus confidence and also luck. I'm not a firm believer of luck. Still, I think there are certain factors वो उस पार्टिकुलर टाइम में कभी कभी होते हैं. तो देखो ये आपका 45 मार्क्स जंप, सेम पर्सन, ऐसा नहीं है कि इसने अपने में 100% इंप्रूवमेंट कर लिया. ये वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी. 21, 22 and 24, 3 times he also appeared. So first interview 21, 98 marks. Same situation as Abhishek Yadav. In first interview, he got higher marks and later his marks was reduced. Same situation happened with him. In first interview, 98 marks. In second, just 75. Same as Abhishek. Okay. So he got 75. And here now in 2024, when he got selection, so increase in 50 marks. You can imagine ki increase of 50 marks. Same situation. He showed confidence. Abhishek Yadav, Vineet Yadav,
video you must have seen. If you not, please watch. Okay. So 50 marks increase. Now Shivankur. So first time 2020, then 22, and then 23. So in 23, his selection. So he also appeared 3 times. First time 90. Same situation. Second time decreased. Now third time 120. So 35 marks increase. Now in these 3 candidates, first time was not great marks, but second time reduced, and then third time very high jump. For one, it is 35. For one, it is 45. And for one, it is 50 marks increase. You can imagine how much increase. Now, pattern is same. Every candidate got 120 or more in the attempt where they got selection. But in second attempt, everyone get reduced marks. Reason? Some reasons are beyond explanation. Obviously, they all were serious candidates. But somewhere, once they appear in interview, they were having faith, yes, I will do. And in that way, there was a little lack of, you can say, complete seriousness, or there was a faith, there was a belief, yes, I will do. But in that way, things were not turning. I already said कि this is beyond proper explanation. Every candidate is giving time, but sometime एक ये होता ना कि एक कॉन्फिडेंस और एक आपको ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें से आपको डिफरेंस को समझना है. आप वंस अपियर हुए तो कभी कभी ये होता है कि एक तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मार्क्स आया लेकिन उतना अच्छा नहीं आया, तो एक तो थोड़ा सा एक तरीके से लगता है कॉन्फिडेंस, एक तरीके से फियर भी आ जाता है. फियर ये आ जाता है कि पिछले अटेम्प्ट में हमने मार्क्स कम प्राप्त किया, तो जो भी है क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजों को आप सेकेंड अटेम्प्ट अब जा रहे हैं. तो मिक्स चीजें होती है, हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जिनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अच्छा अब तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, चीजों को मैनेज कर लेंगे. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा अब खराब हो गया तो क्या होगा. तो एवरी कैंडिडेट इज हैविंग different aspects. I'm not properly in a condition to say exactly the reason, but this is the commonality among all these three. कि 3 times all 3 candidates appeared. But एक पॉजिटिव ये क्या है, मोटिवेशन के लिए आपका के पास क्या है कि in spite of so many attempts and try so many times, appeared in interview 3 times, but finally they get selection. That is the important thing. So selection is important finally. Okay. Now this candidate, classic example, in interview 21, just 45 marks. 45 is lowest in interview, and now it is 102. So increase. This is exceptional case. Okay. Exceptional case. This is not happening. And this is only candidate of this nature I have guided. That is the outlier effect, you can say. 45 and here 102. We got selection. Okay. In 22 batch selection. Now, this candidate also appeared many times, but unfortunately, in 22 batch, he was not able to qualify for in physical part, so did not get chance to appear in interview personality test. Then again, 23 interview marks just 83. Okay, but here you can see in 2024, 114 means 31 marks increase.
Now here, Utkarsh, so 22 and 24. So he was having good marks in 22. Still, he improved and his marks was 120. So 10 marks. In fact, why I have taken these marks now, ki, you see, ki in 22, he got 332 and here he just 311. Since here in 22, cutoff was very high, 21 and 22 cutoff was very high, and in 24, cutoff was lesser. Okay, so even at 311, he got selection. So here also 139 and here just 113.57 means 114. Here second paper 83, here also reduced 77, but in interview, so just for the sake of information, I showed the his marks. This candidate is deserving far more, but unfortunately he got very less marks, 87. Here also just 100, but in paper 1, 24, he got selection and 27th rank. So in paper 1, marks is very high. In paper 2, obviously he should have got a little more. Here it was, see, in paper 1, both here, similar type of in written, see, here 247 and here 240. And here he got 334, but that year 345 was needed, and even in 343 was needed in reserve list, and here 344, so 27th rank. So here just 87 marks and here 100. In 24, in my opinion, obviously he was deserving 120, but things are every time not favorable to you. But when you are getting selection, that is okay. This person, Pavan, 22, 95 marks. In 24, 123. So jump of 28 marks. Here also he got 338. So very close to selection, but here 361 and he got 10th rank. So reason for showing these marks, you should just take motivation. Even let us take as a person, as a person who is preparing, who is serious, many time, maybe possibility is that you are appearing second time, third time, or even first time, or even in exceptional case, fourth time. So you feel what will happen and all. So many candidates marks I have shown. These candidates sometimes got very less marks, and when they got selection, they get very high marks. Every candidate is having potential that you have to remember. अब देखो, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि यस, आई विल डू, आई एम एबल टू डू, उसके चक्कर में आप सीरियसनेस नहीं दे पाते हो। नहीं, देखो, वन साइज डजंट फिट एवरीवन। ये नहीं है कि सबका एक ही कंडीशन होगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो रहते हैं कि ठीक है, मेरा हो जाएगा, और उस लेवल से वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो कभी कभी उनके साथ गड़बड़ हो जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जितना उनका पोटेंशियल होता है, वो उस टाइम में भी साइड सिचुएशन फेवर नहीं करता है, नर्वस हो जाते हैं, कुछ और चीजें हैं जो मुंह से नहीं निकलना चाहिए वो निकल जाता है, वैसी सिचुएशन हो जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, काम करते हैं आपके फेवर में और कभी कभी डिसफेवर में। तो ग्रेजुअली आप जब मोर एंड मोर एक्सपोजर आपका होता है, आप लर्न करते हो, आप अपने मिस्टेक्स करते हो, तो आप धीरे धीरे करके सीखते हो। सो कभी भी ये मत सोचो कि किसी का खराब हो गया है तो उसके साथ डिफिकल्टी है। नहीं, हो सकता है उस अटेम्प्ट में चीजें आपके फेवर में नहीं गई, आपने जो सोचा उस आधार पे टर्न नहीं हुआ, आप जिस कंडीशन को लेकर के चल रहे थे, जो डायरेक्शन लेकर के चल रहे थे, वो डायरेक्शन उस तरीके से नहीं गया।
तो मार्क्स खराब आ गया। लेकिन अभी जब हमारे पास मौका है तो हमें जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको पॉजिटिव वे में लो। जो गलत हुआ या जो खराब हुआ, जो कुछ सही नहीं हुआ, उसको छोड़ना है, और जो कुछ अच्छा है उसको लेना है। अच्छा क्या है? सबसे पहली बात, जो पहले अपीयर हो चुके हो, तो ये मानो कि हम ऑलरेडी उस रिस्पेक्टेड प्लेस पे जा चुके हैं, उस प्लेस पे जा चुके हैं जहां जाना बहुत लोगों का ड्रीम होता है। तो एक कॉन्फिडेंस रखो कि हम पहले भी वहां जा चुके हैं, और यदि सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हमें मौका मिला है तो आई एम इन वेरी गुड कंडीशन। आप रिटेन क्वालिफाई करते हो तो ऑलरेडी आप 97, 98, 99% लोगों से बेटर हो। तो ये बात को ध्यान रखना। बहुत सारे आप में फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, तो ये मत सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सिलेक्शन नहीं। ये मैंने जस्ट आपको दिखाया कि यस, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो इन स्पाइट ऑफ सेटबैक रिकवर किए और अच्छा परफॉर्म किए, बहुत अच्छे मार्क्स लाए और फाइनली सिलेक्शन लिया। तो अपने आप पे भरोसा रखो, डीएएफ को बार बार टाइम एंड अगेन उस पर रिवाइज करो, और कभी भी आप ये ना सोचो कि अच्छा अभी हमारा तैयारी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मॉक इंटरव्यू सोचते हैं कि अच्छा एक बार तैयारी भी थोड़ा सा कर लें। बिलीव मी, परफेक्शन कभी नहीं आता है। आपको किसी के बात को मानने की जरूरत नहीं, आप अपने लाइफ को टर्न करके देखो। देखो, जब आपने रिटर्न दिया होगा, बहुत बार बहुत बच्चे हैं कि रिटर्न डिफरेंट एग्जाम्स के देते हैं, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप एग्जाम में मिस्टेक कर देते हो, और कॉमन मिस्टेक वो होता है। और जब एक बार आप रियल में मिस्टेक करते हो तो बहुत बार वो चीजें आपको लाइफ टाइम ये याद हो जाता है, मेमोरी में हो जाता है। तो बहुत बार जब आप रियल में मिस्टेक करते हो, सपोज आप मॉक इंटरव्यू देते हो, आपसे जो मिस्टेक्स होते हैं तो वो उस पर आपका अधिक फोकस होता है, आप उस डायरेक्शन में वर्क करते हो। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बाउंसर होते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जो कि आपने सोचा नहीं था। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब नहीं है कि उस क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है, रिलेवेंस है, बट आपने उस एंगल से ध्यान नहीं दिया, आपने उस तरीके से नहीं सोचा। तो वैसे भी आपको क्वेश्चन सोचने का मौका मिलता है। प्लस आप अपने पीयर ग्रुप में जो आपके साथ देने वाले हैं, कोई फ्रेंड है, कोई सीनियर आपके हैं, जहां जिनके साथ आपका अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है, जिनसे आप कम्युनिकेट करते हो, तो आप उनसे कम्युनिकेट करो, बातें करो। और यदि वो आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं और या सजेशन देते हैं या कुछ टॉक करते हैं तो जरूर उनसे करो। कोई भी टॉपिक हो उस पर खुद से भी बोलने की कोशिश करो। 30 सेकेंड्स, आई जनरली से कि कोई टॉपिक है आपके पास, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई स्टेटमेंट कुछ भी लिखे हो अपने डीएफ में, या आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो आपके पास 30 सेकेंड्स का कंटेंट होना चाहिए। 30 सेकेंड्स से ज्यादा जरूरत नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर तो आपको एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है ना। यदि फर्दर क्वेश्चन इंक्वायरी कर दिए, वो क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर दिया, तो आपको थोड़ा सा जरूरत होता है। लेकिन जनरली मेजोरिटी ऑफ केसेस में 30 सेकेंड्स की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रीडम भी है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। तो डेफिनेटली आपको जहां से मौका मिलता है वो कीजिए। लेकिन जब किसी प्रॉपर सजेशन लेते हैं तो उन कैंडिडेट्स में भी कोई है जैसे, तो उनसे लीजिए जो एक्सपीरियंस्ड है या जो कोई सिलेक्टेड है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। अब सिलेक्शन में ऐसा नहीं है कि हर सिलेक्शन वाला कैंडिडेट जो है प्रॉपर आपको गाइडेंस दे ही सकते हैं। सिलेक्शन दूसरी चीज होती है, प्रॉपर गाइडेंस दूसरी चीज होती है। जैसे एक पर्सन है, किसी ये गया एक इंटरव्यू में अपेयर हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया, मे भी हो सकता है कि उसके मार्क्स अच्छे भी आ गए होंगे, बट सारी चीजें फेवर की, वो अच्छा आ गया। तो गेटिंग मार्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड सजेस्टिंग इन सेम वे
is not working for every candidate. Every candidate is unique. आप में से हर कैंडिडेट जो हो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, अलग अलग आपका एजुकेशन हुआ, अलग अलग स्टेट से आए हो, बहुत सारी चीजें कॉमन आप में हो सकती है। ऐसा किसी स्टेट से 10 कैंडिडेट आ सकते हैं, 20 कैंडिडेट आ सकते हैं, किसी बैकग्राउंड से, सिमिलर टाइप के बैकग्राउंड से बहुत सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं। लेकिन एग्रीगेट में देखा जाए तो टोटल हम कंपोनेंट्स को मैच करें तो आप में और जो अदर कैंडिडेट हैं बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। तो यू आर यूनिक, एंड इन दैट वे यू हैव टू वर्क, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एक्ट। तो अपने आप को सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा क्या कंडीशन है, हम किस कंडीशन में हैं। हम क्या फर्स्ट फ्रेशर हैं, क्या सेकंड टाइमर हैं, थर्ड टाइमर हैं, हमारा स्ट्रीम क्या है, हम किस कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कहाँ एजुकेशन प्राप्त किए हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ऑलरेडी हमारे फैमिली में कोई फोर्स में है या हम फर्स्ट हैं, क्या हम सिविल सर्विसेज एग्जाम भी दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, या सिर्फ हमारा टारगेट है यही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एवरी कैंडिडेट को यूनिक वे में जज किया जाता है। कोई मणिपुर से बिलोंग कर सकते हो, तो कोई कश्मीर से बिलोंग कर सकते हो, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई गुजरात से। तो सबके जो कंडीशन है वो अलग अलग है। यदि आप मणिपुर से बिलोंग करते हो तो आपके पास ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि सबको ट्रबल फेस ही करना पड़ता है, लेकिन चैलेंजेस हो जाते हैं कभी कभी। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि कहीं किसी स्टेट में आप हो, और वहाँ किसी भी कारण से, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के कारण, फेस्टिवल के कारण, या कुछ और चीजों के कारण कभी कभी बहुत सारे शोर होते हैं, नॉइज होते हैं। आपका घर कहीं ऐसा जगह हो जहाँ आसपास बहुत लाउड म्यूजिक बजता हो, या कुछ और ऐसी सिचुएशन होती हो, या एकदम रोड के किनारे हो और वहाँ बहुत सारा जो रेगुलर नॉइज होता है, तो ऐसे कंडीशन में आ सकते हो। तो हर कैंडिडेट जो है अलग अलग है, और उस यूनिकनेस में आपको अपने आप को समझना है। कभी भी ये मत सोचो कि किसी भी कैंडिडेट का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में हुई है तो उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं। बोर्ड जो है, इंटरव्यू बोर्ड जो है, आपको अपने कंडीशन पे जांच करती है कि आप किस कंडीशन में हो, आप कहाँ से आए हो, आपका अब तक क्या एक्सपोजर है, आपके क्या स्ट्रेंथ है, आपके क्या वीकनेसेस हैं, आप कैसे चीजों को सोचते हो। तो अपने आप को प्रॉपर तरीका से देखना है। बहुत सारी बातें हैं, रेगुलर बेसिस पे मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ, बहुत बार मोटिवेशन के तौर पे, बहुत बार मैसेज के तौर पे। और मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि मेरी बातों से एग्री हो। आपकी मर्जी है, आप एग्री हो नहीं हो। मैं एवरी टाइम सही नहीं होता हूँ, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है। अब गलत लेकिन उस सेंस में नहीं है। बहुत बार जैसे सिचुएशन होता है कि हमने कुछ कहा, अब आपने कुछ और समझा, या हमने आपको कुछ सजेशन दिया, आपने उसमें मॉडिफाई किया। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वही 100% सही है, नहीं। आपको लगता है कि हमें थोड़े से उसमें मॉडिफाई करना है तो जरूर कीजिए। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है। और आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर हार्श कमेंट्स ऑल्सो, योर मैसेज which are not favorable to me also. I am ready to accept, because this is journey for me also. Those candidates who are attached with me, their selection is my selection, their failure is my failure. If I am taking credit of success, then I should also blame myself for failure. But remember, it is not my selection, it is your selection, it is your journey. I am just a facilitator. And not only me, you are free in this world to take suggestions from any person who is ready to give some time, spare some time. But always remember, it is your journey. You are 100% in yourself. For a teacher, a mentor, you are not 100%. For a teacher, some candidates will get selection, some will not get selection. But for you, it is not average. For a teacher, it may be average, it may be data, but for you, you are 100%. So give 100%.
Okay. Thank you.